Hello everyone, welcome to BDSK online classes. Myself Sanjay Verma. Dear students, I hope that all of you feeling well at your houses and enjoying with your family and also doing hard study of your subjects. Dear students, today in this my video I am going to teach you about next heterogeneous mixture, that is suspension. Dear students, you can see number of suspensious mixture around yourself. Dear students, a suspension is a heterogeneous mixture in which small particles of solid are spread throughout the liquid without dissolving. मीन्स दैट सस्पेंशन ऐसा हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में फैले होते हैं बिना घुले हुए. ओके, मीन्स दैट यू कैन से दैट द सबस्टेंसेस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन. मीन्स दैट ऐसे इनसॉल्युबल सबस्टेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल हो तो वाटर के साथ सदैव वो सस्पेंशन ही बनाएंगे. मीन्स ऑल दी सॉलिड सब्सटेंसेस व्हिच आर वाटर इनसॉल्युबल ऑलवेज फॉर्म हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दैट इज सस्पेंशन. ओके, फॉर एग्जांपल मडी वाटर, कीचड़युक्त पानी, मटमैला पानी, यू नो दैट. नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, chalk water, chalk powder and water, the mixture of chalk powder and water. Okay, the mixture of suspended sand particle in water. Okay, flour in water, पानी में आटे को घोल दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए. These examples belong to suspension. And I want to tell you the some properties of suspension. Dear students, suspension can be seen by naked eye. What? Suspension can be seen by naked eye. Means इसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, दे कैन फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द फिल्टर पेपर. फिल्टर, इन्हें हम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड द लाइट. ओके, ये लाइट को तितर बितर कर सकते हैं. ओके, मीन्स if be thrown light through this solution, through this mixture, they dismiss the pathway of light. Okay, there is no straight pathway seen in this mixture. Okay, next is size of these particles are larger than 100 नैनोमीटर. मीन्स इन पार्टिकल की साइज क्या होती है? 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है. ओके, एंड यू नो दैट सस्पेंसर आर also a kind of
heterogeneous mixture. Understood? It is a heterogeneous mixture. Next and last property of suspension is they settle down after some time. मीन्स इन मिक्सचर्स को यदि कुछ समय के लिए स्थिर रख दिया जाए एज अ कांस्टेंट पोजीशन, दे बिकम सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. ओके, सो there are another number of examples and maybe property of the suspension. So dear students, I hope that all of you understood about the suspension, which is a heterogeneous mixture, and you commonly seen around yourself in your villages, etc. So I hope that all of you understood from this something from the suspension, and you can also identify the suspension present around yourself. Thank you. Have a nice day.